Hello students, welcome to DCA. So this video is for NDA students actually. As notification has been released, around 415, as far as I remember, around 415 vacancies are there as per the norms, including all of them. Okay. So those who have missed NDA-I 2019, in case you had some exam or in case you tried but failed to clear the written exam, it's time to rethink, re-strategize your plan to crack the NDA exam, right? Maybe last time शायद आपका board exam था, you have not got much time to revise, you have not got much time to practice mathematics, you haven't touched, क्योंकि काफी बच्चे NDA-I में ऐसे होते हैं जो fresher वाले, those who haven't touched the GS part मतलब वो basically meaning that history, polity, geography, social science या current affairs, क्योंकि time नहीं मिलता. April 22 as far as I remember was the exam date, 21 या 22 को था. और बोर्ड एग्जाम करीब आई थिंक 4 या 5 अप्रैल तक चला ही था जो कंप्यूटर साइंस वाले ऑप्शन थे. सो इट वाज डिफिकल्ट टू क्रैक और यू कैन से प्लान. और 15 दिन में मोटिवेशन बढ़ जाती है कि अब क्या करना, जितना आता है. सो यू हैव अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड द बेसिक फिजिक्स साइंस यू हैव डन इन योर क्लास मे बी 11th 12th और 9th 10th, राइट? ऑल्दो साइंस क्वेश्चंस आर नॉट सो टफ, बट वो कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं, समटाइम्स यू मिस इट, राइट? इफ आई रिमेंबर लाइक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आई रिमेंबर सम गुड स्टूडेंट्स, राइट, who actually done it incorrect actually. Isoelectronic क्या वो ये गलत कर गए, right? एक student who has cleared actually the written exam has done wrong nuclear what we say plants are based upon fusion or fission, उसमें भी वो गलती कर गया. तो ये छोटी-छोटी mistakes करते हैं. खैर, let's forget that mistake. Let's have a new start. So if you have applied for NDA-II 2019, मे बी आप शायद कॉलेज में होंगे, कुछ लोगों ने कॉलेज में शायद एडमिशन लिया होगा, बट स्टिल यू माइट बी प्लानिंग कि नहीं पेपर तो देना है. सो चाहे वो सेल्फ स्टडी से दे चाहे जैसे भी दे, राइट? सो अराउंड 50-60 डेज, मिनिमम 60s आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट ए गुड स्कोर. अब फिर वही बात है ना कि अब 300 लाओगे, फिर कहोगे मैं बाउंड्री पे हूँ, 310 मैं करूँ ना करूँ, राइट? सो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट यू शुड प्लान 400 प्लस. अगर आपके 400 प्लस स्कोर है तो आप डेफिनेटली सेफ साइड हो, right? Even in SSB, right, you will be on the safe side कि चलो 400 है तो majority of the chances are there कि आपके जो इंटरव्यू होता है आपके नॉलेज पे भी ठीक ठाक नंबर दे देगा. Okay, so what we are offering, right? So the batch will be around 60 days, which is our conventional batch. 60 दिन का प्लान हमारा वैसे भी होता है because 30-40 दिन में बहुत फर्क पड़ता नहीं है, because number of topics are more than 60, so it's very difficult to finish anything in 40 days, right? So that's why we don't have 40 days batch. 60, or in fact I would rather say add some more days as well. 60 plus 10 मतलब plus 10 in terms of class hours कि आप लेके चलोगे 10 दिन जो रिवीजन के लिए, या फिर कुछ टॉपिक्स रह गया हो, आपका कोई डाउट रह गया हो, you can stay here and ask your doubts, you can stay here, appear for the test if you are. तो 10 दिन आपके बैंडविड्थ में आता है कि आपने उसमें कैसे कोचिंग का फायदा उठाना है. ओके, next, the class hours. So we have divided this program into number of class hours for each section because you have to clear sectional cutoff. बहुत सारे लोगों को GS वाले sectional cutoff में problem होती है. Problem मतलब they are not very clear whether you need to score overall या फिर पॉलिटी में इतने लाना है. ऐसा कुछ नहीं है. इंग्लिश का sectional cutoff होगा और GS मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ऐसा होगा. इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि सेक्शन डी में आपको इतना लाना है, सेक्शन ई में लाना है, बिकॉज क्वेश्चंस आर मिक्स्ड. इंग्लिश के क्वेश्चन 1 to 50 होते हैं, दैट मींस आउट ऑफ 50 यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम इज 20%, बट ट्राई टू स्कोर मोर देन 30 करेक्ट, देन ओनली यू आर ऑन द सेफ साइड. एक होता है मिनिमम, दूसरा होता है मेजॉरिटी कि बच्चों के कितने मार्क्स आए, उस बेसिस पे मिनिमम से ज्यादा कट ऑफ जा सकती है. ओके, सो द जीएस क्लास आवर्स इज अराउंड 180 प्लस आवर्स, सो दैट मींस including physics, chemistry, biology, history, polity, geography, right? So more or less we will be focusing upon MCQs in the science section apart from the conventional class lectures, because if I say gravity decreases with height, yeah, सबको पता होगा, but if the question will be gravity decreases with altitude from the sea level, now इसका थोड़ा ना आप confuse हो जाओगे because आपने पढ़ा होगा height, अब ये सी लेवल आ गया, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्चुअली आस्क्ड बाय यूपीएससी, राइट? सो दे विल नॉट आस्क यू बैरोमीटर, दे विल आस्क यू हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर. सो दे ऑलवेज ट्राई टू ट्विस्ट देयर टंग सो दैट कि आप उसमें ट्रैप हो जाओ, बिकॉज़ दे हैव टू वीड आउट. कोई बच्चा बुरा नहीं होता, वो बस एग्जाम के दिन क्या है कि वो छांटने की प्रक्रिया. एग्जाम इज नॉट फॉर सिलेक्शन, एग्जाम इज ऑलवेज फॉर रिजेक्शन. आपका इसलिए नहीं हुआ बिकॉज़ आपसे ज्यादा कोई ले आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है.
पहले कट ऑफ 200 होते थे, 250 होते थे, वो बच्चा भी आज के डेट में सक्सेसफुल ऑफिसर है। जो आज 330 लाता है वो सक्सेसफुल, वो रिटर्न नहीं क्वालिफाई कर पा रहा, लेट्स सपोज। तो मार्क्स इज नेवर अ क्राइटेरिया, बट इट इज अ वे टू फिल्टर आउट। सो यू शुड ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम, राइट? नेक्स्ट, we basically, as a part of DC, I can promise that we basically believe in test. So more and more number of tests, even in the serious batch we have done this. So around 24 sectional tests. Sectional matlab, let's suppose we divide the history portion in 4 tests, right? There are 4 sectional tests, right? Geography in 5 tests, और full syllabus में आप जैसे आपका physical का एक हो गया, Indian geography का एक हो गया, फिजिक्स का एक हो गया। फिजिक्स के सेक्शनल वैसे आपको हैंडआउट्स तो मिलते ही रहेंगे। अराउंड 30-40 सेट्स you will be receiving for the class practice, which will be discussed in the class. Apart from that, the last one, which is the most famous one amongst our coaching, is the current affair booklet, which we promise. इसमें से अगर आपका करंट अफेयर 10 होता है, करंट अफेयर का वेटेज 10 होता है, इट कैन बी 11-12 एज वेल, 10 से 12 के बीच में, राइट? सो अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली फ्रॉम द बुकलेट, because we plan it for the long term. 2-3 महीने लगते हैं इसको कंपाइल करने में, as well as the MCQ booklet for the conventional subject. Conventional मतलब GS और mathematics. So 40 questions for a chapter, which you need to practice, which you must practice in order to gain confidence. Because these questions are qualitative in nature. ऐसा नहीं कि सिंपल 1-2-3 उठा कर कहीं से डाल दिए। 10 में से कोई एक क्वेश्चन होता है कि हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो बाकी आते होंगे। If you say that कि अगर आप ये स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन जानते हैं तो बाकी आप by default कर लेंगे। This is what we feel. Right, so around 700 questions are there which you need to revise apart from your booklet जो आप practice करते हो, जो भी आप revise करते हो, considering PY skills as well, right? So this is all about your NDA-II 2019 program starting from, right, 17th of August, right, first batch. Then again the next batch will be starting around 28th of August, right? So you can inquire at the number 7710548960. This is DCA number, or as well as you can email, right? You can email for the sample booklet. आपको कोई chapter notes चाहिए, वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो. If you want any sample test paper to check out the quality of the test, you can definitely write to us. We will respond. Any queries, any question, you can definitely email, WhatsApp, or comment below as well, right? So this is, this is again I say that. Generally, you Google out the best coaching for NDA. ऐसा कुछ नहीं है. You can take 2 days demo as well, right? Because majority of the coaching will not give you demo because they fear. उनको डर रहता है कि एक दिन आप क्लास लगाओगे तो अगले दिन छोड़ के भाग जाओगे, right? And this is what you feel. So मैं हमेशा कहता हूँ आपको, because I had been associated with major coachings of India, especially in the defense sector. I always say, जिस भी कोचिंग में जाओ, 1-2 दिन आप क्लास डेमो लो. अगर वो कोचिंग आपको डेमो नहीं देता है, don't get disillusioned by the infrastructure. वो इंफ्रा देख करके आपका 40-50 हजार डूबेगा ही, तो बाद में आप मुझे मत कहना, right? So that's all. Any question? If you want a brochure, prospectus, you can ask us at this number. Thank you.